हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स अकेडमी। तो इस लेक्चर में हम लोग सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात करेंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और उसको हम कैसे उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स शेयर द स्क्रीन। ओके, तो वी नो दैट कि हमारे पास डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में हमने सीख लिया है कि हमारे पास माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। और डिटरमिनेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटरमिनेंट को सीखा था। तो आइए जरा लिख लेते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अगर मान लीजिए कि इफ द डिटरमिनेंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का अगर जीरो है, if the determinant of a matrix is zero, obviously the matrix should be square because square matrix के लिए ही determinant defined है। So if A is a square matrix and its determinant is zero, so this type of matrix uh, then A is singular matrix, है ना। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, इफ A is not equal to zero, so in this case A is a non-singular matrix. Okay, so this is the definition of the singular matrix and a non-singular matrix. Next we talk about the adjoint. So a square matrix A is said to be singular or non-singular according their determinant is zero or non-zero. Okay, so let's define another thing, that is adjoint of a matrix. So we already knew about the your cofactors. तो on the position हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो अगर उस एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो जो भी मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स। ओके, सो लेट अस सी कि हमारे पास कैसे हम निकालते हैं। तो लेट अस डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग हियर लेट ए और दिस द मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे of order n by n because it is a square matrix. Okay, b I square matrix. The matrix of order is this thing n। अगर हमने हर एक एलिमेंट ए आई जे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका जो कोफैक्टर है उसको कैपिटल ए आई जे से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एंड वी कैन से एंड दिस ए आई जे be the cofactor corresponding cofactor of aij in this determinant A. So then the matrix
then the matrix B, which is the वो फैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज लेना है, जस्ट टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इट, सो यू कैन जस्ट विल गेट ए जे आई, है ना, ट्रांसपोज रोज का कॉलम कॉलम पर रोज में इंटरचेंज कर देता है, तो वी विल राइट लाइक दिस इज ए वन वन, ए टू वन हो जाएगा एंड शो ऑन अप टू ए एन वन, एंड सिमिलरली दिस इज ए वन टू ए टू टू एंड सो ऑन अप टू ए एन टू, है ना। इस तरीके से हमारे पास ये जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, वी विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए एन, ओके। so this is the adjoint of matrix A, ये मैट्रिक्स का adjoint हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड होता है, तो दिस इज कॉल्ड, यू कैन जस्ट सी, then the matrix B is called or the adjoint, of A, and is denoted by adjoint of, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, एंड तो क्लियरली वी कैन सी कि दिस इज द जो जो हमारे पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना उसका हम ट्रांसपोज लिया, तो यू कैन से आल्सो दस इजीली सी thus the adjoint of a matrix is the transpose of the matrix formed by cofactors। ये लिख लिए ताकि आपको ध्यान रहे, द cofactors, है ना। तो thus the adjoint of a matrix is the transpose of the matrix formed by the cofactors of A, क्लियर। अब हम एडजॉइंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द एडजॉइंट, बिकॉज इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, तो लेट अस राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ओके। सो लेट अस राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि if A is any n square matrix, है ना, कोई भी हमने एक कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n, ठीक है, then we have this A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A is just equal to determinant of A into identity matrix, है ना। इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए विद देयर एडजॉइंट, तो इसमें होगा क्या, यू नो दैट कि प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर सारे कोफैक्टर्स पड़े हुए हैं और ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं,
तो मान लो पहली रो लिया, तो उसको अगर हम उसी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अदरवाइज वी विल गेट जीरो। ओके, तो यहाँ पर यही होगा, क्योंकि हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर सारे कोफैक्टर्स पड़े हैं और ट्रांसपोज ले लिए, तो हम करेंगे क्या किया, फर्स्ट रो लिया, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से अदर प्लेसेस पे जीरो आएगा, और जो डायगोनल पे है उस पे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। इसको आप अपना अपने से भी करके देख सकते हो इस रिजल्ट को। ये रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि एडजॉइंट को अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट अ स्केलर मैट्रिक्स, एंड इन दैट स्केलर द डायगोनल एलिमेंट जो होगा, जो कॉमन डायगोनल एलिमेंट होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें हर एक डायगोनल पे एंट्री सेम होती है, तो वहां पर जो एंट्री सेम होगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल होगा, है ना, ए के डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा, तो वहां पर एक स्केलर मैट्रिक्स निकल के आती है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा, where this where you can see कि In is the unit matrix, लिख लीजिए, the unit matrix, पहले से पता है आप लोगों को, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है ना। तो जब हम यूनिट मैट्रिक्स के अंदर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट अ स्केलर मैट्रिक्स की हेल्प से, जिसमें जो कॉमन नंबर होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच द स्केलर इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? ओके, लेट्स राइट द सेकेंड वन। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है कि if A is a non-singular, obviously non-singular matrix, it means determinant of A is not equal to 0. This is a non-singular matrix, है ना। So if A is a non-singular matrix of order n, then we have determinant of adjoint of A is just equal to डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। इस रिजल्ट को फिर से इधर लिख लेते हैं, n माइनस वन। तो रिजल्ट जो है तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ठीक है, प्रोवाइडेड कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन अगर हमें किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना हो, तो इफ वी नो द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो उसका पावर रेज कर देंगे n माइनस वन। ओके, उसका एक्सपोनेंट n माइनस वन रेज करते हैं। तो इसका प्रूफ भी हम इजीली देख सकते हैं, इफ वी वांट टू प्रूफ ऑफ इट क्लियरली वी कैन सी, क्योंकि हमको अभी पहला रिजल्ट पता हुआ है, वी नो दैट। So if clearly is non-singular, is a non-singular matrix of order n, तो एक चीज तो क्लियर है, यू कैन जस्ट से हियर कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, ये तो पता ही है। ओके, सो देन वी हैव फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट क्या हमारे पास है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is just equal to determinant of A into identity matrix of order n। ये तो था, ये तो पहला रिजल्ट कहता है कि हमारे पास कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए हमारे पास
this condition is what a into adjoint of a is equals to determinant of a into I n, है ना. So अगर हम देखें कि हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, है ना, तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड. तो जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो वी नो दैट कि डिटरमिनेंट खुल जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन और इसका होल डिटरमिनेंट. समझिएगा, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा. यहाँ तो ये दोनों मैट्रिसेस हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए भी एक मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. कुछ इस तरीके से होता है. यू नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट ओपन होता है, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. तो ठीक, लेकिन यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है दिस इज एन स्केलर, और स्केलर जब हम किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. इसका मतलब है कि वो हर एक रो के अंदर मल्टीप्लाई. तो जब हम होल डिटरमिनेंट की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास हर एक रो के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड, उसको जब हम कॉमन लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना. तो दिस यू कैन जस्ट से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितने हमारे पास यहाँ पर रोज होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में n रोज होंगे और हर एक n रोज के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए मौजूद है. तो यहाँ पर जब हम हर रोज से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बाहर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, है ना. इस आउटसाइड हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एक और n बचेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है. तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n हमारे पास मिल जाएगा. ओके, अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम पहले ही नॉन जीरो लेके चले कि दिस इज नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. so it means you can divide it, so this implies adjoint of a is just equal to determinant of a to power n upon determinant of a, and that will be equal to determinant of a की power n minus. तो implies that कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, in that case you can just say this is determinant of adjoint of a का जो डिटरमिनेंट है that is equal to determinant of a की power n. clear? Okay, so we have done these two results. Let's talk about the third result. Result number third क्या कहता है कि if a is a non-singular, is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of a is just equal to e to power n minus वन का होल स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पर बोला है कि एडजॉइंट का एडजॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लें, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर. तो इसको भी हम देख सकते हैं सी की कैसे हमारे पास एक चीज होगी. तो इफ वी आर टेकिंग दिस इज ए इज ए नॉन सिंगुलर, तो अभी प्रीवियस रिजल्ट से हम एक चीज तो जानते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then we have अभी प्रीवियस रिजल्ट की एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है दैट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस वन. ये है हमारे पास. अब हम रिप्लेस कर देते ए को विद एडजॉइंट ऑफ ए, है ना. तो रिप्लेसिंग
इसी रिजल्ट के अंदर रिप्लेसिंग हेयर दिस ए बाई adjoint of A B गेट। तो हम अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, और जहां ए था उसकी जगह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन। अब हमें हमें एक चीज पता है, हमको इसका डिटरमिनेंट चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए था, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, जो अभी हमने रिजल्ट लिखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल पावर, दिस इज योर n माइनस वन। क्लियर? तो अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर, तो सिमिलरली अगर हमारे पास होता है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट थ्री टाइम्स होता, तो वहां पर क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का क्यूब। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जनरलाइजेशन भी हम इस रिजल्ट का कर सकते हैं। तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज योर, ठीक। तो ये थर्ड रिजल्ट था। अगर इसी रिजल्ट का हम जनरलाइजेशन करते हैं थर्ड का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, जनरलाइजेशन ऑफ द above result। तो व्हाट विल बी द जनरलाइजेशन, एडजॉइंट 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 जितनी बार टाइम्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर वही रेंज हो जाएगी। तो इफ वी कैन सी, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर matrix of order n, then adjoint, है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट इस तरीके से वी आर जस्ट राइटिंग योर एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये हमने मान लो ले लिया k टाइम्स, एडजॉइंट का एडजॉइंट एडजॉइंट का एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं, और उसका हमें डिटरमिनेंट चाहिए। तो व्हाट विल बी गेट, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका पावर n माइनस वन का होल पावर, ठीक है। जितने टाइम्स हम एडजॉइंट लेंगे उतना n माइनस वन की पावर रेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट जनरलाइजेशन है। यहाँ पर से टू टाइम्स एडजॉइंट लिया था, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एक फॉर n माइनस वन की स्क्वायर आ जाएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर n माइनस वन की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्ट आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट है फिफ्थ रिजल्ट, इफ वी आर सेइंग if A is a non-singular matrix, singular matrix of order n, and this key be any scalar, then this adjoint, this is your key times of A is just equal to, this is key to power n minus वन बाहर आएगा into adjoint of A, ठीक है। तो इफ यू आर जस्ट, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई करा ए के अंदर और उसका आप होल एडजॉइंट ले रहे हो, तो आपका k की पावर n माइनस वन बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एडजॉइंट के अंदर क्या है, कोफैक्टर्स हैं, और कोफैक्टर्स जो बचते हैं वो हमारे पास सब मैट्रिक्स होते हैं, एक रो और वही वो रिस्पेक्टिव कॉलम को रिमूव करने के बाद। तो अगर मान लो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स n ऑर्डर की रही होगी,
तो हमारे पास जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो n-1 ऑर्डर की बनेगी, और उन सारे एलिमेंट्स के अंदर k मल्टीप्लाइड है, तो k मल्टीप्लाइड है, तो जब हमारे पास कोफैक्टर बनेगा तो हर एक कोफैक्टर के अंदर हमारे पास k की पावर n-1 जो है बाहर आ जाएगा। उसका डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो k की पावर n-1 आपका बाहर आ जाएगा, और इट मीन दैट कि वो एडजॉइंट जो हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, वहां से k की पावर n-1 हमारे पास मिल जाएगा। हर एक एलिमेंट के अंदर k की पावर n-1 मल्टीप्लाइड होगा, तो वी विल टेक आउटसाइड, so it means adjoint of k into a is just equal to k की पावर n-1 into adjoint of a. Okay. Okay, so next let's talk about, अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है तो इट मीन दैट कि उसका जो एडजॉइंट है वो भी हमारे पास, एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट वो भी सिंगुलर आएगा, है ना। यू कैन जस्ट से हियर 5 is 6 रिजल्ट है कि इफ a is a singular matrix of order n, then adjoint of a is equals to 0। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, नंबर 7, एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हमारे पास सिंगुलर होता है, और अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर आएगा। जस्ट राइट हियर adjoint of a non-singular matrix is non-singular, is non-singular। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है हमारे पास, तो लिख लेते हैं कि इफ A is a non-singular matrix of order n, then adjoint of A is just equal to determinant of A की पावर n-2 into A। ठीक है, so if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint of A is just equal to determinant of A की पावर n-2, है ना, into A। तो what we are saying here कि हमारे पास अगर हम होता था A into adjoint of A करते थे तो determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती थी। यहाँ पर हम कर रहे हैं कि adjoint of A एक मैट्रिक्स वी आर गोइंग, और वो मैट्रिक्स हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एक बार n-2 इंटू ए से मल्टीप्लाई करके भी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, लेट अस सी कि कैसे। अच्छा रिजल्ट है ना, इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि adjoint of A is just equal to determinant of A की पावर n-2 into A। ओके, बट A शुड बी नॉन सिंगुलर, है ना। तो लेट अस राइट हियर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट था जो हम पहला रिजल्ट पढ़े थे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then
this is A into adjoint of A is just equal to determinant of A into I, ठीक है. So replacing this one, this is your replacing this is A by adjoint of A, we get, तो रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए इन दिस, इसी रिजल्ट के अंदर हम जहां एडजॉइंट ए है कि जब एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको मिला. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आपका आई एन, ये मिल गया. ठीक है. और वी ऑलरेडी नो कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको हम क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन, है ना. क्यों? क्योंकि हमें पता है सिंस एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम करके आए हैं, जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन. जॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस. अब हम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So multiplying both sides, both sides by a. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, so you multiply here a, so this is a into adjoint of a, और बाकी ये तो है ही पहले से adjoint into यहाँ पर adjoint of a. ओके, ये है. और राइट साइड में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस वन इंटू ए. ओके, एंड इन द प्लेस ऑफ दिस, इन द प्लेस ऑफ a into adjoint of a, we can put the determinant of a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें फर्स्ट रिजल्ट से ही पता है. ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस वन इंटू ए. और तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो क्लियरली यू कैन से आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स से ही हो जाएगी. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए. ये तो हमें प्रूव करना है ना. तो क्लियरली हमारे पास क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज adjoint into adjoint of A, adjoint of A is just equal to determinant of A की power n minus टू into this is it. ठीक है, तो we have done this proof. और यहाँ पर जो हमने रिजल्ट यूज करा है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर लो. कौन सा हमने रिजल्ट यूज करा है कि दिस इज योर A into adjoint of A just equal to determinant of A into identity. क्लियर? तो दिस इज, तो कभी भी हम adjoint of A निकाल रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस टू इंटू ए मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर ए मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ adjoint of A. क्लियर? Let's talk about ninth one. So if A and B, if A and B are two, if A and B are two square matrices, square matrices of same order, square matrices of same order,
same order, then adjoint of A plus B is not equals to adjoint of A plus adjoint of B, है ना। मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं हमारे पास ये और भी द सेम ऑर्डर, इन दैट केस आल्सो सेम ऑर्डर, तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो उनका अगर एडिशन है तो एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, इट मीन्स कि सम में एडजॉइंट जो है ओपन नहीं होता इन जनरल। क्लियर? ओके। 10th जो रिजल्ट है आपका एडजॉइंट के ऊपर, वो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू square matrices of same order, then इनके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या है रूल, वो जरा देख लेते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ A into B is just equal to adjoint of B, okay, into adjoint of A। तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर एडजॉइंट हमारा ओपन हो जाता है इन अ मल्टीप्लिकेशन, है ना। ओके, तो द लास्ट वन रिजल्ट, if A is a square matrix, A is a square matrix, then adjoint of A का ट्रांसपोज is just equal to adjoint of A का होल ट्रांसपोज। मतलब adjoint of A ट्रांसपोज is just equal to adjoint of A का होल ट्रांसपोज, है ना। तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चीज ओपन होती है तो where we can say where it is the transpose of matrix ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट, है ना। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स हमारे पास बन सकते हैं वो सारे रिजल्ट्स देखिए जो रिजल्ट है। तो दो तीन चीजें याद रखनी है, जैसे कि एडिशन के ऊपर एडजॉइंट नहीं ओपन होता है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, और अगर हमारे पास ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का, उसका हम एडजॉइंट ले रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाता है। क्लियर? तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होगी, और आप इनको लिखिएगा जरूर एक बार, पेन कॉपी जो है पेन कॉपी जरूर यूज करिएगा, उससे हमारे रिजल्ट्स हमारे दिमाग के अंदर बैठेंगे। और छोटे छोटे जो प्रूफ्स है उनको जरूर करें, और हायरार्की बनाए प्रूफ्स की, ताकि हम एग्जाम्स की ड्यूरिंग हमको चीजें समझ में आ जाए, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको अगर हमें प्रूव करना पड़े तो हम आसानी से कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच, keep watching, keep learning, thank you so much।